the world 2020 champions India. इस समय अगर हम देखें इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रेंथ जो है वो बहुत जबरदस्त है। अब हम इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करते हैं। इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रेंथ जो है ना वो आप जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है इट केटर्स टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। उसी तरह इंग्लैंड का जो स्क्वाड है उनकी जो बैटिंग डेप्थ है इट केटर्स टू डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट सिचुएशंस। उससे पहले they have Jos Buttler, who is their captain, who is their most attacking batsman. And to me personally, yes, we have Babar Azam and we have Surya Kumar Yadav जो टॉप रैंकिंग्स में जा रहे हैं, आपके आईसीसी के टॉप रैंक प्लेयर्स में हैं, T20 में हैं. But Jos Buttler to me is the most ferocious T20 batsman today. He is the best T20 opening batsman today. I think मतलब मुझे डर लग गया था जब मैंने पहला मैच देखा था जिस तरीके से उन्होंने पिटाई की थी ऑस्ट्रेलिया की। ऑब्वियसली उस दिन उन्होंने अपना फ्रंट लाइन पेस अटैक नहीं खिलाया था। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जॉस बटलर इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ बिग say in how England perform in this World Cup. Last year, also in the UAE, he was really influential. He played a couple of really attacking knocks. He played a couple of really clutch innings, जहाँ पे वो खड़े रहते हैं, ज़्यादा time लेते हैं. And then in the latter half of the innings, he makes up for lost time. But this time he has the added responsibility of being captain. I think it might just add a little bit of pressure onto his shoulders. But again, it just remains to be seen the way they go. When you talk about the rest of their batting lineup, you have Moeen Ali, you have Ben Stokes. Of course, you're talking about these players who have a lot of experience of T20 cricket. I think Ben Stokes बहुत influential हो सकते हैं. Right. You talk about Ben Stokes, and yes, maybe he's not in that great form, but the way they use Ben Stokes is going to be very important. When I say the way they use Ben Stokes, because David Malan भी है. David Malan एक समय पे number 1 T20 batsman रह चुके हैं ICC rankings में. That was really surprising because he's not really that attacking batsman. He's much more of a fluent batsman, rhythmic batsman, momentum के साथ खेलते हैं. And there's a balance here that England needs to find कि David Malan को वो number 3 पे use करेंगे या बेन स्टोक्स को नंबर 3 पे यूज करेंगे, नंबर 4 पे कौन आएगा. आई थिंक दे कीपिंग रियली फ्लूइड. जो उनका लोअर बैटिंग ऑर्डर है उसको काफी फ्लूइड रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जल्दी विकेट गिरेगा तो दे विल यूज दाविद मलान. अगर ओपनिंग पार्टनरशिप ब्लॉसम कर जाएगी एलेक्स हेल्स और बटलर के बीच, देन दे विल यूज बेन स्टोक्स टू मेक एन इम्पैक्ट. और यहाँ पे मैंने एलेक्स हेल्स का नाम लिया. आई थिंक उनका नाम और उनकी प्रेजेंस इस T20 स्क्वाड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमने बात की कि कैसे ये सारे खिलाड़ी हैं, इनके पास T20 एक्सपीरियंस है. एलेक्स हेल्स से ज्यादा T20 एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है. ही हैज बीन अवे फ्रॉम द इंग्लैंड इंटरनेशनल स्क्वाड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ड्यूरिंग दैट टाइम हर जगह खेला है उन्होंने. बीबीएल में तो बहुत ज्यादा खेला है उन्होंने. बीबीएल में बहुत ज्यादा रन्स बनाए हैं उन्होंने. बेसिकली ही इज प्लेइंग ऑन हिज होम ग्राउंड्स. इंग्लैंड के हैं वो, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जाके अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं. आई थिंक these 4 guys are going to be really important. And then you look at in terms of their bowling attack, I think they have really good bowling attack as well. Adil Rashid aapke spin element ho gaye. Then you have Chris Wokes. Then you have Mark Wood. Mark Wood ki pace first T20 mein aapne pucha na kya difference raha. Mark Wood ki pace, that was the major difference. And Mark Wood ki pace dekh ke mujhe kabhi lagta hai ki India ke paas zyada pace hai nahi. आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखो, आप इंग्लैंड की बॉलिंग देखो, इंडिया के पास कंपैरेटिवली ज्यादा पेस नहीं है. Then you have others, you have somebody like a Ben Stokes, वो भी bowling करा सकते हैं. Chris Jordan है, he can be your death bowler. Then you have Sam Curran, he's your all-round element in there. और एक नाम जो है लियम लिविंगस्टन. मतलब बड़े छक्के देखने हैं ना तो इनके बैट से आएंगे. He was really influential in the UAE. I think he'll have a bigger role to play. I don't see how you can stop this England squad or England side from reaching the semi-finals. Again, like I said, uske baad lottery hai. What do you think? I absolutely think that. And when you were talking about the England squad, I was waiting for you to talk about Livingston and Sam Curran, because the way Sam Curran has played, it's been phenomenal. He's always there when the team needs him. And talking about Ben Stokes, again, an all-rounder, we saw that fielding effort recently, how good he is in fielding as well. So when it comes to, Ben Stokes kind of a player, there are times when people say that, oh, he's not batting well because he's going out to the pavilion quite a lot many times, scoring less runs. But then when it comes to bowling, he's great. Then it comes about fielding, again, then he's great. And that actually compensates, what he is not doing in the batting department.
Absolutely. और यहाँ पे absolutely. And this is where आप Ben Stokes की बात कर रहे हो, where he's if he's not scoring runs, then he's bowling or fielding, and that reminds me of Ravindra Jadeja, because we're not going to see Ravindra Jadeja and he's going to be a big miss for India. But यहाँ पे आप एक हरफन वाला खिलाड़ी है ना, वो Ben Stokes है, आप उनको गेम से दूर नहीं रख सकते. In every way he is going to be contributing to the game, and when you have such players in your side, and they have so many players, they have Sam Curran, Moeen Ali, Ben Stokes, 3 प्लेयर तो आपके ऐसे ही हो गए. और आपने लियम लिविंगस्टन की बात की. Last year I just recall when you mentioned Liam Livingstone, yes, he's not going to hit just those big sixes. Last year UAE में he was also used as a second spinner. Sometimes he was used as a front line spinner, क्योंकि आपने आदिल रशीद को नहीं खिलाया था या मोइन अली को नहीं खिलाया था. बैलेंस ढूंढने के चक्कर में Liam Livingstone played as the second spinner, he played as the third spinner. UAE में you can sometimes use 3 spinners. यहाँ पे again imagine you have Moeen Ali and Adil Rashid and Livingston playing in the same 11. Australia, maybe you don't need as many spinners, but even then you have all your bases covered. I think England, one of the favorites for this T20 World Cup, is just how Jos Buttler's captaincy brings them together. There's a blueprint there. Blueprint है उनके पास. एवन मॉर्गन के साथ ये लोग खेले हुए हैं. एवन मॉर्गन के साथ इन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है. सेमीफाइनल पहुंचे हुए हैं. 2016 का फाइनल पहुंचे हुए हैं. इंग्लैंड आर ऑन अ रोल इन आईसीसी टूर्नामेंट्स. ब्लूप्रिंट है उनके पास, बस ये देखना है कि ये इस टूर्नामेंट में कितनी दूर जाते हैं. और एक फिनिश करने से पहले एक बात और, दे प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया. एक इंस्पिरेशन, एक एक्सटर्नल और फैक्टर अगर आपको चाहिए ना, तो वहां पे ये है. लास्ट ईयर एशेज में बहुत बुरी पिटाई हुई थी. यू वांट टू रिजुविनेट योरसेल्फ, यू वांट टू कम बैक, यू वांट टू मेक अ पॉइंट. इससे बड़ा पॉइंट क्या होगा? यू आर एन इंग्लिश साइड, आप ऑस्ट्रेलिया जाके T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हो. इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है. True, right. So we talked about their batting, their bowling. We also talked about their fielding. But Chetan, in that we missed one point about their weaknesses. What are the weaknesses of the England side? I think the over dependency on the big players. जो आपके बड़े खिलाड़ी हैं, Jos Buttler, I think the over dependency on him can be really a big weakness. Yes, he's going to score runs, but what happens when he doesn't? Somebody else has to raise their hand. So I think the over dependency is there. Unka bowling attack, it can be a little weak. Chris Woakes, yes, exceptional bowler. I loved watching Chris Woakes in Test cricket, but is he your quintessential T20 bowler? I'm not sure. Mark Wood, exceptional pace bowler. बहुत जबरदस्त deck hit करते हैं. 145, he'll be a handful on those pitches, but he can be one-dimensional at times. So I think the over-dependency on their key players will be a weakness. Maybe their bowling attack, maybe their pace attack. Chris Jordan, great death bowler, really great death bowler, but he can have his off days. और जब उनके off day आते हैं ना, तो आपके पास छुपने की जगह नहीं रहती है. So minute things, मतलब nitpicking कह सकते हैं, लेकिन इतनी weaknesses है नहीं. But nitpicking करें अगर, तो थोड़ी बहुत individual weaknesses आ जाती हैं. And I think the way England overcome those individual weaknesses as a unit is going to define their World Cup.